Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the Ukraine crisis. So, the billions of questions arise in the intellectual mind that can Ukraine defend itself from Russian invasion? Before we discuss the Ukraine's defense capability against Russian power, we should must watch the military comparison between two countries. So, if we see the two countries if you see the two countries' military comparison, so Russia has absolutely superiority on a military, either in three side an air defense system and air strike, land force, naval force, air force, in all these military powers, Russia is extremely edge on the Ukraine. तुम्हें पता है कि रशिया का जो मिलिट्री पावर है दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है और यूक्रेन जो आता है 23 नंबर पे आता है। चाहे उसके एक्टिव पर्सनल हो, मैन पावर हो या उनका जो लैंड कैपेसिटी हो, टैंक्स ईटीसी, एंड उसके पास जो कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो जेट फाइटर होते हैं, एयर कम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, या आपकी जो नेवल पावर्स हैं जिसमें सबमेरिन्स और फ्रिगेट्स, या आप कह सकते हैं कि aircraft carrier. In all these areas, Russia is extremely edge on Ukraine. So now the question arises that can Ukraine defend itself from Russian invasion? So before we can answer this question, we must know these points. On the basis of these points, the Ukraine can define its defense capabilities. Number one is the diplomatic support from the West. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वेस्ट की तरफ से, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, या आपका यूएस हो, या होल यूरोप हो, अब वो देखें कि डिप्लोमेटिकली कितना यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। चाहे डायरेक्टली वो जो फॉरेन ऑफिस है रशिया की उससे एंगेज करें, या इनडायरेक्टली जो रशिया के अलायंसेस से दे पुट प्रेशर ऑन दोज अलायंसेस जस्ट लाइक चाइना, India, they push on the pressure on exert pressure on China and India, and India, you know, say the Russia pull back from the invasion and further incursion toward the Ukraine. So इस नज़र में हम देखें कि डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वेस्ट की वो डिफाइन करेगी कि जो यूक्रेन की डिफेंड कैपेसिटी है या वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है या नहीं कर सकता इन कमिंग टाइम। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर सेकंड जो चीज़ आती है कि जो यूक्रेन का डिफेंस कैपेबिलिटी बयान करता है वो है मिलिट्री असिस्टेंट टू यूक्रेन। हमें पता है एक्चुअली अराउंड 2 to 3 लाख जो मेन पावर यूक्रेन के पास मौजूद है और मिलिट्री पावर्स भी मौजूद है। उसके अलावा जो नेटो अलाइंसेस है वो भी यूक्रेन के साथ स्टैंड हैं। अब मिलिट्री असिस्टेंट कितनी प्रोवाइड करते हैं, हमें पता है कि जो यूएस ने 1 वीक अगो जब ये इन्वेड करने का जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, प्रिडिक्शन की जा रही थी फ्रॉम द वेस्ट साइड के रशिया विल मोस्ट प्रोबेबली अटैक ऑन यूक्रेन, तब यूएस ने डिसाइड किया था कि 5 से 7,000 यूएस ट्रुप्स विल बी सेंडिंग टू यूक्रेन। एंड we know that the Ukraine is bordering with other NATO allies, तो NATO allies जो वेपन्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। उसके अलावा मेन पावर भी वो खुल के पब्लिकली तो नहीं बता रहे, मतलब अंदरूनी तरह से एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली वो मिलिट्री असिस्टेंट चाहे वेपन्स हो चाहे मेन पावर हो वो यूक्रेन की तरफ सेंड करें। अब कितना सेंड कर रहे हैं इसका इसका डिपेंड करता है इनके डिफेंस कैपेबिलिटी पे। जितना वो मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे उतनी उसके चांसेस हो जाएंगे कि यूक्रेन कैन डिफेंड अगेंस्ट रशिया। तो ये भी एक पॉइंट है। नंबर वन डिप्लोमेटिक पॉइंट हो गया वेस्ट की तरफ से। सेकंड वन मिलिट्री असिस्टेंट हो गई, यूक्रेन को अगर प्रोवाइड की गई तो वो डिफेंड कर सकता है। एंड नंबर थ्री जो सेक्शन होंगे, जो रिसेंटली आप देखें कि जोई बाइडन हो, उन्होंने अनाउंसमेंट की है, एग्रेसिव इकोनॉमिकल एग्रेसिव अनाउंसमेंट की है और एक सेक्शन अनाउंस किए हैं जो पनिश करेंगे जो रशिया की इकोनॉमी है, डॉलर, पाउंड, येन या अदर जो करेंसीज हैं उनमें उनकी
बिजनेस को लिमिट किया जाएगा, और दे पुट सर्टेन सेक्शन ऑन द सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ रशिया, and Canada, UK, France, Japan, and South Korea, all the allies of US, NATO, and Ukraine, they announced different section on the Russian business market and Russian companies. तो अब देखते हैं वो कितने जो पनिश करेंगे रशिया की इकोनॉमी, उसको भी डिपेंड करता है। उनकी जो टेक्नोलॉजिकल पावर है, जो इकोनॉमिकल पावर है, उसे कितना रिड्यूस करेंगे, वो रिडक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से देखा गया है कि जो जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कंडेम किया हुआ है इस सेक्शन को, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेम किया हुआ है, और सेकेंडली उन्होंने ये बताया है कि एक मीटिंग भी उन्होंने अरेंज की है, मगर अनाउंस ऐसा कुछ सेक्शन नहीं किया जैसे उनके यूक्रेन के अलाइसेस ने कुछ सेक्शन अनाउंस किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ की, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं आया। बाकी आप देखें, रशिया वेटो पावर है, कोई भी रेजोल्यूशन इसके खिलाफ नहीं आ सकता, तो it is also null and void. They cannot stop Russia for further incursion or further attacking Ukraine. सो इस पे भी डिपेंड करता है कि अपना यूएस कितना इन्फ्लुएंस यूज करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रशिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए और रशिया को मजबूर किया जाए ताकि वो पुल बैक हो फ्रॉम फर्दर अटैकिंग ऑन यूक्रेन। अब ये देखें, जो लास्ट पॉइंट है, जो पब्लिक प्रोटेस्ट वी सी इनसाइड द रशिया अगेंस्ट द वार ऑन यूक्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक इन यूरोप, यूएस, and and some other countries. But the protest inside Russia, it's also create pressure on Putin that it must reverse its decision to invade, completely invade on the Ukraine, and outside of Russia also put pressure on Russia to stop further attacking on Ukraine. So these are the points. If these points strongly and effectively working, so they can may punish Russia and may compel Russia and by stop Russia for further incursion, further attacking, further invading, and maybe Ukraine can maybe success to defend itself. Thank you very much.